Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथिरे मु ऑलरेडी प्लस टू सेकेंड इयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एबे मु प्लस थ्री CBCS फिजिक्स ऑनर्स जीई आ MSc फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोस अपलोड करुच्ची जदि भल लगिला ताले वीडियोस को लाइक कर देबा और चैनल को सब्सक्राइब कर देबो यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स आल्सो इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पई बेल आइकन को एठी ऑल रे सेट कर देबो तापरे वीडियोज रो क्लैरिटी बढ़ावा पई गो टू सेटिंग्स क्वालिटी एडवांस उपरे क्लिक करी यू कैन इंक्रीज द रिजोल्यूशन सबू वीडियोज पाई पीडीएफ नोट्स मु पठेबी जोटा एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करी यू कैन गेट द लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तापरे मोर चैनल नेम को क्लिक कले सबू वीडियोज को मु यूनिट वाइज एच पार सिलेबस सजाई की रखिथिबी व्हिच यू कैन गेट फ्रॉम द प्लेलिस्ट एठी सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज आम गोटे नुआ यूनिट स्टार्ट करवा मैथमेटिकल फिजिक्स रे इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स और द इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशंस सो एथिरे आम आज फोरियर इंटीग्रल थ्योरम विषय पढ़ा व्हिच इज अ पार्ट ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म्स और फोरियर ट्रांसफॉर्मेशंस यार स्टेटमेंट कौन इफ वी टेक अ फंक्शन f of x which is piecewise continuous on every finite interval होची -l और l भितरे and it is absolutely integrable on the x axis then it can be represented by an integral जहाँ को कि हमें कहबा Fourier integral which is given as fx equal to integration 0 to infinity a function of omega cos omega x plus b function of omega sin omega x d omega एटी a और b हला constants which can be represented by like this okay a equal to this much b equal to this much so इटा हला यार statement एबे हमें यार proof आड़ को जिबा so we know that जेतेबेले हमें फोरियर सीरीज एक्सपांशन जदि करबा गोटे फंक्शन रो बिटवीन द इंटरवल -l to l it can be given by fx equal to a0 by 2 plus summation n equal to 1 to infinity an cos n pi x by l plus bn sin n pi x by l एटा तुम जानिछ ओके सो एबे आकु पढिबा हमें an और bn रो वैल्यू मध्ये जानिछु ओके लाइक दिस now we substitute these values okay of the coefficient which are the Fourier coefficients a n and b n in the first equation that is equation 1 ताले एबे हमें यार वैल्यू गुडा पुट कर दबा okay we put the value further okay total value गुडा पुट कर देला and we try to solve it okay so simple solution अछि देखो हमें एई जगह रे एबे पहुंचबा okay now we substitute this n pi by l to be equal to omega ताले delta omega which is the difference याको suppose हमें नेला omega n plus 1 minus omega n that is n plus 1 pi by l minus n pi by l or simply delta omega equal to pi by l okay ताले एबे याको हमें equation 4 रे पुट करिबा okay एटी प्रिंटिंग मिस्टेक अछि this should be 4 equation 4 रे हमें एबे पुट करिबा so we are getting a simplified equation like this now we know that when l approaches towards infinity then 1 by l will approach towards 0 and also delta omega जार वैल्यू थिला pi by l जेहेतु अछि pi तो होची constant so l जेहेतु तळे अछि so it will approach towards 0 okay then the infinite series in this equation 5 becomes an integral from 0 to infinity because 0 और infinity भितरे ही यार रेंज रहउची ओके सो एई जो इक्वेशन 5 अछि एथिरे देखो ए जो फर्स्ट टर्म टा हियर वी हैव 1 by 2l माने l तळे अछि so this will approach towards 0 so we are left with the second term only so याको हमें लिखि देबा ए हिसाब रे एबे एठी cos omega t minus x माने एठी cos a minus b यार फार्मूला हमें पुट करिवा which is cos a into cos b plus sin a into sin b so दुई भाग रे हमें याको भाग कर देला okay further we will solve it let us introduce two quantities that is a omega and b omega जोटा constant थिला which is equal to 1 by pi integration minus infinity to infinity ft cos omega t dt similarly b omega को हमें हिसाब रे लिखिबा
now it is ft sine omega t dt. So the above equation 6 will be now simplified into this form, right? So this is our Fourier integral of the function fx. Okay, hence we have proved the Fourier integral theorem. Now এই जो Fourier integral এটা पुणी आमे याकू डिवाइड करि परिबा into various category. गोटे हला Fourier cosine integral. So जदि function fx गोटे even function ताहले here b omega will be equal to 0, but a omega will be equal to 2 by pi 0 to infinity ft cos omega t dt. Hence the Fourier integral now will be fx equal to 0 to infinity b omega तो कटिगला 0 होउछि, so it is equal to 0 to infinity a omega cos omega x d omega. याको आमे कहिबा Fourier cosine integral. Similarly next होउछि Fourier sine integral. Sine integral माने एठी जदि फंक्शन टा गोटे ऑड फंक्शन हितबो ताले बे उल्टा हबो a omega हि जिवो 0 and b omega हि जिवो 2 by pi 0 to infinity ft. Now it is sine omega t dt. Okay, so the Fourier integral becomes this much, b omega sine omega t dt. Okay, so it is Fourier sine integral. And here note that if the function fx has a point of discontinuity, suppose at a point x0, then the Fourier integral is given by f of x0 plus f of x0 minus divided by 2, which is the average of the left hand and right hand limits. Okay, left hand और right hand limits रो average करागला. Okay, तापरे आमे जदि एई Fourier integral को एबे complex form रे लिखिबा, complex form रे माने जदि एठी Fourier integral जदि आमे गोटे नउचु function which is represented like this. Okay, now एई जो cos omega t minus x अछि आमे जानिछु एटा होछि गोटे even function of omega. Then एई इक्वेशन को आमे लिखि परिबा like this जोटा आमे ऊपर देखुतिला. Okay, so एटा आसीगला एबे equation 2. Then we also know that for odd function we have integration minus infinity to infinity sine of omega t minus x dt equal to 0, and here sine omega t minus x is an odd function. तेणु करी ए इंटीग्रेशन बा इंटीग्रल टा 0 हो जिवो. ताले इक्वेशन 3 गोटे आसिला ऊपर गोटे इक्वेशन 2 थिला. ओके, ए दुईटा को हमें एबे ऐड करिबा so that we are getting the function like this. ओके, ए दुईटा को एबे ऐड कर देला, so function हमरो एई भलिया आसी गला. Now you note that एठी हमरो I जो वैल्यूटा अछि जोटा होछि कॉम्प्लेक्स नंबर तुम यार वैल्यू जानिछो -1 रो स्क्वायर रूट. ओके, सो या को एबे हमें सिंपलीफाई कर देला. एठी जो स्क्वायर ब्रैकेट रे क्वांटिटी अछि देखो, इट इज समथिंग लाइक cos थीटा प्लस I sin थीटा जार वैल्यू हुए e टू द पावर बाय एक्सपोनेंशियल I थीटा. ओके, सो हमें या को एई हिसाब रे लिखि देला. ओके, वी यूज दिस फार्मूला. ओके, ताले एबे हमें सिंपलीफाई कर देबा. सो फाइनली वी आर गेटिंग the required representation of Fourier integral in the complex format. Okay, and at the end let us see some of the standard useful results जोटा कि हमें यूज करिबा in order to solve various types of problems related to the integral transforms. Okay, so एटा हला देखो minus infinity to infinity e to the power minus x square dx equal to square root of pi. ओके, यार गोटे जनरल फॉर्मूला अछि, आकु प्रॉब्लम सॉल्व करला बेल को मु बतेबी तुमको. देन वी हैव अनदर फॉर्मूला, एटा होछि sin ax by x dx which is equal to pi by 2, and this formula holds if a is a positive number. ओके, तापरे एटा बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मूला e to the power ax cos bx dx equal to देखो ए जो क्वांटिटी एटा सेम रहउछि. ओके, एटी sin x रे भी एटा ए क्वांटिटी सेम रहइबो. स्क्वायर ब्रैकेट रे जो क्वांटिटी अछि एटा चेंज हबो. को हिसाब रे मु टिके बेसिक आईडिया बते दोछि. ए जो bx देखो जो एंगल टा अछि, एंगल ही एठी होछि bx, सेही एंगल टा एही सब जगह रे सेम रहिबो. ओके, bx तापरे एठी cos लेखिला, सो आगो cos ही लेखा हबो. एठी sin लेखिला आगो टर्म टा sin हबो. ओके, एंड फर्दर द
सेकेंड टर्म जोटा कि तार उल्टा टर्मटा राइट तापर फाइनाली 5 नंबर रे कहूची e to the power minus ax by x sin bx dx which is equal to tan inverse of b by c, and here b and c are also positive numbers. Okay, so this is all about the basics of Fourier transforms and the Fourier integral theorem. Thank you.